आज हो गया तो आज आए हैं प्रोफेसर वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी नॉलेज यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार अग्रवाल, डॉक्टर अजय कुमार, हमारे दोस्त और टीचर नतीजा के अंदर वो देकर मनुष्य मरीज को बेहोश करके नेक के ट्यूमर का ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर आर्मन नाम की पत्नी है जो डॉक्टर उन्होंने कहा कि इनको सम्मानित करने के लिए और अन्य डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाए। तो 1842 में जॉर्जिया यूएसए में भारत के उदाहरण को फॉलो करते हुए अमेरिका ने बहुत सदियों भारत सरकार ने डॉक्टर पीसी राय जो प्रतिष्ठित चिकित्सक ही नहीं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के फार्माकोलॉजी के हेड डिपार्टमेंट प्रतिष्ठित चिकित्सक शिक्षक डॉक्टर रॉय, डॉक्टर शांति राय और जन रोग विशेषज्ञ में जिनकी कोई शादी नहीं है वो है प्रोफेसर अमरनाथ झा और सत्यनारायण कुमार जो IMA के एक सदस्य हैं और उनके बगल में डॉक्टर वसंत सिंह बैठे हैं जो जिन्होंने अपने पूरे जीवन को IMA में लगा दिया है। इसके अलावा और भी हमारे सब दोस्त बैठे हैं जिनमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आज मैं सुनना चाहता हूँ अपने अजय बाबू के सुपुत्र का एक संभाषण, इसलिए मैं डॉक्टर जोहार साहब, नॉलेज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अग्रवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एकेन्स इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जी, गुरुदेव IMA के विश्वविद्यालय पर डॉक्टर DK चौधरी जी, IMA के जवाहर विश्वविद्यालय पर भी कहे जाते हैं डॉक्टर कैप्टन GS सिंह जी, गुरुदेव डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी, उनके बिना कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता है। हमारा छोटा भाई रमेश बाबू, अशोक शंकर जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर कुमार ठाकुर जी, हमारे छोटे भाई डॉक्टर दिनेश कारक जी, बेगम सजन, बिहार में ही पटना में खजांची रोड में पैदा लिए थे। हर साल हम लोग आए वाले लोग वहाँ मौनी में फूल माला चढ़ाते हैं। 1888 में पैदा लिए, उसके बाद शिक्षा दीक्षा प्रदान हुई। मेडिकल कॉलेज पास करने के बाद लंदन गए, जहाँ बाद से FRCS हुआ। ऐसा बहुत कम डॉक्टर इंडिया में हुआ उसने सर्जन और मेडिसिन दोनों का डिग्री लिया। वहाँ के लौटने के बाद कुछ मिस्टर हुए और उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला, सबसे सर्वोच्च अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड मिला। आज के दिन हम लोग सभी उनको नमन करते हैं और डॉक्टर विधानचंद्र राय जी का तो डॉक्टर डे केवल इंडिया में ही नहीं मनाया जाता है, अमेरिका में मनाया जाता है, कई देश में मनाता है, डिफरेंट डेट में मनाया जाता है। इतना पॉपुलर नेता हुए
कोई भी काम शुरू करने के पहले पेशेंट देखते थे और गरीब युवा का मदद करते थे। उसी तरह का हम सभी डॉक्टर बने, समाज का सेवा करें, यही उस जमाने में कई धारणा थी। आज के जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद सरकारी चिकित्सकों के भाग्य को बदला, उनके भाग्य बुझाता डॉक्टर अजय कुमार सर को मैं बुलाना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मेहंदी जब सखी में प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। उन्होंने भी सुई का दर्द महसूस किया है, उसे भोगा है। अपनी प्रैक्टिस गंवा के उस सरकारी सेक्टर में काम करने वाले चिकित्सकों की तकदीर बदली है, जिन्हें पैसा तो बहुत कम मिलता है सरकारी। तो लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा अपना और इतने ही के जरिए नहीं, बहुत लोगों का साथ है। जिस समय हमें उम्मीद थी, जैसे हमारे अध्यक्ष ने महोदय कहा कि सरकार, अन्य संगठन जिनके लिए हम काम करते हैं, जनता, आज का दिन उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए था। लेकिन कल मैंने एक पोस्ट लिखा था कि इवन अभियंता दिवस पर सरकार का एक पोस्ट आता है और लिवर दिवस का आता है, लेकिन डॉक्टर दिवस पर लोग मन की बात भी नहीं करते हैं। तो ये बड़ा दुखद लगता है कि मन की बात तो कम से कम जनता के बीच जुड़ने के लिए, जनता के बीच में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को ले जाने के लिए एक अभियान छेड़ा है। और इस डॉक्टर दिवस पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम सभी लोग अपना पीपुल कनेक्ट जो है, जनता के साथ जो कनेक्ट है हमारा है, उसको कभी नहीं भूलेंगे। वही हमारे भगवान हैं, वही हमारी सब कुछ है। और आज मैं अब इस डॉक्टर दिवस पर मैं सारे लोगों को जो हमें याद करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उनको शुभकामनाएं को प्रेरित, मेडिकल छात्र को प्रेरित करने के लिए कि इन दिनों में, इस दिन स्कूल के कॉलेजों में सक्रिय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर ए.के. सिन्हा इंस्टीट्यूट IMA के द्वारा, एक्चुअली IMA कार्यक्रम है, डॉक्टर ए.के. सिन्हा इंस्टीट्यूट में साथ दे रहे हैं। आज का फेलिसिटेशन कार्यक्रम भी इसमें है। चिकित्सा के क्षेत्र के अवार्डी, एसोसिएशन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित करने हेतु आज का ये कार्यक्रम IMA की उपलब्धियों का महत्वपूर्ण आयाम है। आज बड़े भाई IMA के चालक डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद के द्वारा जब मुझे सुबह में मोबाइल पर कहा गया कि तुम्हें आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होना है, सम्मिलित होना है, तो मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि मुझे उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग विदेशों में, अलग अलग समय में शुरुआत किए गए हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका के जॉर्जिया से हुई थी। 30 मार्च 1933 में फिजिशियंस द्वारा डॉक्टर्स के सम्मान में यह दिन विश्वास करने के लिए निश्चय करने का ये आइडिया यूडोरा ब्राउन एलमन ने दिया था। बता दें कि यूडोरा ब्राउन एलमन डॉक्टर चार्ल्स की एलमन की पत्नी थी। इसके बाद 30 मार्च 1958 में यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यूडोरा के आइडिया को अपना लिया। भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर राय को 1961 में भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया था। आज सभी चिकित्सकों के आज के इस डॉक्टर्स डे पर आज सभी चिकित्सक जो शामिल हो रहे हैं, आपका स्वागत है। विशेषकर ए.के. सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं IMA के द्वारा दिए गए सम्मान में आयोजक लोग धन्यवाद के प्राप्त हैं। भाषा और सभी के जो भी चिकित्सक यहाँ पर आए हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सब धन्यवाद के प्राप्त हैं कि आपने इस परंपरा का शुरुआत तो किया। आज का दिन महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य के, जिन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है, हम उनको याद करते हैं, उनके मानव सेवा को भी याद करते हैं।
साथ ही हम याद करते हैं आज बिहार के चिकित्सकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी के बावजूद हम चिकित्सक जिस सेवाभाव से मुजफ्फरपुर में कार्य कर रहे हैं, आने वाला इतिहास उनको याद करेगा दोस्तों, याद करेगा। उन्हें भी आज के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना चाहिए या उनको भी यहाँ से मैसेज देना चाहिए कि हम लोग IMA के चिकित्सक आपके साथ हैं। दोस्तों, बंगाल की धरती को डॉक्टर BCI ने अपने कर्मभूमि बनाया, आज उसी धरती पर चिकित्सकों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर भी चिकित्सकों को चिंतन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। धन्यवाद सर। और डॉक्टर ठाकुर जी, डॉक्टर संजीव रंजन जी, शिवेंद्र बाबू और डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर विनोद बाबू, अखिलेश बाबू, डॉक्टर अशोक शंकर जी और जितने भी सीनियर लोग आए हैं, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसके साथ मीडिया और स्पॉन्सर सब आप लोग आए यहाँ इस डॉक्टर डे के दिवस पर, इसके लिए आपको शुभकामना और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय। Physicians, doctors in Western countries. But this discussion has not been seen and has not taken front position in our country, and research in this field is lacking, especially in India. These kinds of headings has been very prominent currently in newspapers, especially a recent case happening in Maharashtra where a young doctor committed suicide. And believe me, at AIMS in my tenure at 7-8 years, I have at least heard 5 or 7 cases of resident doctors committing suicide. And at one point of time, there were among 32 beds, there were 7 resident doctors who were admitted in psychiatric ward for various reasons. So, mental health problems in doctors is a fact. It's on a rise and it needs to be addressed. Suicide although grabs a lot of attention, but it's just the tip of iceberg. If you see various studies across different countries, you will find that various different disorders or issues, I will not like to call it to a extreme level of disorders, but mental health issues have been very prominent. The most common measure which has been used to measure the mental well-being of doctors or problems of doctors has been, the term has been used as burnout, which was recently being inducted in ICD by WHO, but later retracted by them, and it was not eventually taken into their consideration. But it's a common condition which has been occurring, and burnout has been defined in various ways by different researchers, and prominently three broad symptoms can be seen. One is of emotional exhaustion, which is felt in various somatic ways: anxiety, loss of appetite, anger, irritability, and you can see it also happens that a patient is reduces amongst us when a burnout occurs. And you will be surprised to see the data on burnout. This is from a very prominent national survey which was conducted in the United States, and it was found that 56% of medical students were found to have burnout at one point of time. It's more than half. And suicidal ideation were almost present in 1 out of 10 students. So it's quite an alarming number. And I would like to point out by this data one more thing, that you will see that as the career progression happens and a person becomes senior in his or her field, the rates starts declining. So this problem is most prominent amongst the young, our students, our interns, our residents. So the loss would be a huge loss that if we don't address this problem. As far as Indian data is considered,
I could find only 2 studies. One was very old, and this was a recent study which was conducted in PGI Chandigarh. The findings were alarming. More than 90% of the respondents, of the faculty members and different residents, more than 90%, they say that they feel burnout at some point of time in their residency or their career. So just imagine that 30% had a clinical depression. Although the tool, I would like to point out the limitation of the study also, that the tool which was used was PHQ-9, which is just a screening instrument which doesn't actually, I would not call it a diagnostic tool to measure depression, but still, by screening, around 30% of people were found to have clinical depression, and around 17% said that they have suicidal ideation at that point of time. So it's a cross-sectional study in a tertiary institution which is hold in high regards like PGI Chandigarh, and such findings were found. Factors which is responsible for it. As you can see that we can divide it in workplace factors, like I will just point out few things like long work hours. We remember that during our residency, people used to feel proud and say that I have worked for 72 hours in a stretch, and they would be very proud about this fact and stating this in front of the juniors and saying that you should be working around like this, you should be working on 72 hours for, in a stretch. It shouldn't be a big deal for you. But should we be encouraging this culture of working 72 hours non-stop? Are medical students not human? Will they not make errors if they are working 72 hours in a stretch? Human errors occur very commonly, and it was found that in studies in the Western context, that major reason for the errors occurring on the side of the doctors were long working hours was one of the major reasons behind it. Another thing I would like to point out is there is a culture amongst medicine that promotes neglect of self-care and indifference to personal wellness. We don't expect our patients to be ill and working, but we expect ourselves, our residents, our seniors, doctors, to be working when they are ill. It's not taken very kindly if you say that I have a fever, I am not coming today. It will be said that बस बुखार तो है, काम पे नहीं आ सकते हो. But हमारा patient जब हमारे पास आता है तो we are very empathetic towards them and say that भाई you do one thing, take a rest for 7 days, then go back to work. But the same yardstick doesn't apply for doctors. So this culture needs to be addressed. There are some individual characteristics which also determine the response to the stress that a person feels. Individually, if a person is high on neuroticism, like emotionally very unstable or has an emotional reaction or emotional reaction to problems rather than problem-solving approach, that person is more has a higher chances of developing mental health problems in them. And the problems in doctors doesn't only affect the doctors, it will affect ultimately it's going to affect the entire healthcare system, and the measured cost is very high. And sadly we haven't had this kind of studies in India, but the studies done in the US and Western context has found that the major reason for increasing cost, replacing a physician, the cost for replacing a physician when the person has a burnout or has an illness is around $2 to $3 million. It was estimated in a year. So imagine the cost that the healthcare system has to face because of it. What happens when a person has this kind of problem? This was another study which was done in 2010. It was found that only 7% of people who were found to have clinical symptoms decided to consult anyone. Out of that, that they don't want to consult anyone for whatever problems they have. So it's a huge number. And what was the reason given by them? One was again lack of time, preference for self-management.
this happens very commonly that as doctors we feel that we can manage all our conditions on our own. खास करके mental health issues are felt that it's not that important or urgent to consult someone for that. And one of the major reasons is that there is a fear of confidentiality. They feel that if they are going to consult someone, they visit a psychiatrist in the hospital, that would give a very bad impression or bad name for them. I remember one of very senior doctors at AIMS. He was having problems with substance abuse. He was under treatment in psychiatry and had to visit, he was opioid dependent, had to visit OPD on a daily basis to take buprenorphine tablets. I remember he used to cover his face and had a cap on his head, and used to come around 12:30 when all the patient used to go and directly visit the consulting doctor and take the medicines, because the medicine has to be administered in front of the doctor, and just go back. Sadly, eventually he had he died because of overdose at a very promising age of his career. But the kind of stigma that he was facing while visiting, because I was the senior resident at that point of time, and he was under my care, so I know him personally. Another person, for 4 years, when I started my residency, I was seeing a patient I was posted in neurology at that point of time, and he came for consultation for his mother. And while I was seeing a patient of OCD, he heard the questions that I was asking the patient. And after that, he somehow, through one of my juniors, found the phone number. He called me back. He was a consultant at Safdarjung at that point of time, and said that I have such problem. Can you guide me on telephone? But I will not be able to come and visit you at your OPD. Eventually, after 3 to 4 years, finally he turned up. Because you can't help after a certain extent on telephonic conversation is not going to make much of a difference. So eventually he has to turn up, and while my residency was ending, I remember how well he felt after the treatment for a period of 2 to 3 years. So seeking treatment is one of the important things. And I know many people believe that psychiatric treatments are not that effective. There is a concern I have seen amongst them. This is from finding from a research findings, not what I am saying. They don't believe that the treatment is going to work, or they should be taking that treatment. So what can be the approach towards such problems? It always starts with increasing the awareness about the problems. So, talking about it, discussing about it is the first step towards it. Second is designating in an institution or in a hospital, there should be a time where it should be designated for reflection. For example, if some error has happened in a particular setting, it's not necessary that that person needs to be pulled up at that point of time itself. It can be a meeting, like a mobility meeting or a certain kind of rounds, grand rounds, which generally happens in most institutions. Should be the time when we should reflect upon our general population of having a mental health issue. Especially the trainees and junior doctors are at greatest risk, and as we grow up and as we become teachers, we should be very careful and cautious that how we deal with our trainees and residents. Most common reasons I have already discussed about. So it's vital to build a culture within medicine that recognizes how the job can impact on the well-being of doctors and promote mental health and self-care. Thank you.